Good morning, student. How are you? Now we are going to start our new chapter, Interior of the Earth. Interior means the inside the Earth. Now let us start our chapter. The structure of Earth. This is the structure of Earth. Look at the structure of the Earth. It is divided into three parts: crust, mantle, and core. Crust, mantle, and core. The uppermost layer of the Earth is called crust. Now look at the crust, mantle, and core. Crust, the topmost layer of the earth, is known as crust. Its thickness, it varies from 8 kilometer to 50 kilometer. Means that somewhere it is 8 kilometer and somewhere it is 50 kilometer. Okay, it is much thicker under the continent. Where the oceans is there, the thickness of the crust is less, and when it is uppermost layer like the earth we have seen it, here the thickness is about 50 kilometer. The crust is furtherly divided into two layers. The upper crust is known as shell and the lower crust is known as sima. Shell is composed of the material silica and aluminium. Its density is about 2.4. Now the sima is the composition of silica and magnesium. This layer from the thin and fragile ocean floor, its density is about 3.0 kilometer. Now let us start. Our next topic is mantle. The layer under just the crust is known as mantle. This part of the earth is known as mantle. It is made up of denser matter and has an average of density of 3.2 kilometer. It is storehouse of magma. Here the magma is stored. Magma, the molten rock under the surface of the earth, is called magma. Now the most common mineral is magnesium iron silicate. It is magnesium iron silicate. Anyone knows the color of magnesium iron silicate? It is of green color. It is of green color. Now let us look about core. Now look at the core. The center of the earth is known as barosphere. The core is the center of the earth. It is also known as barosphere and the average density is 10 to 12 kilometer. The core is made up of nickel and iron. That's why it is also known as NIF. And the average temperature of the inner core is about 300 degrees Celsius to 600 degrees Celsius. The outermost temperature of the sun and the innermost temperature of the earth is about same. It is 6000 degree Celsius. You all have to write these things which I have written. आप सभी को ये सारी चीज़ें लिखनी हैं जो मैंने अभी बताई हैं और जो मैं लिख रहा हूँ. Now look at the structure of the earth core. It is of three types: semi-solid matter, liquid core, and solid core. Here we can find semi-solid core, जो हमें semi-solid के रूप में means not to be liquid or not to be solid. Here we can see the liquid core, and the last one is solid core. The innermost is solid core. Now our next topic is rock and minerals. Rock and minerals. All solid part of the earth crust including sand, clay, etc. are termed as rock. Rock are generally composed of more than one substance is called mineral. यानी जब एक से अधिक सब्सटेंस रॉक के अंदर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं. मिनरल आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ कंटेन वन और मोर एलिमेंट. यानी मिनरल्स के अंदर क्या होता है? एक से अधिक
एलिमेंट्स होते हैं which have defined physically and chemical property. They have some different physical and chemical property. Now look at the types of the rocks. Now the first type of rock is igneous rock. The rock that is due to solidification of magma are called igneous rock. देखिए हमारी अर्थ के अंदर जब मैग्मा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्मा किस लेयर में पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन द मेंटल। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये किसके रूप में होता है, हमारे रॉक्स के रूप में, मिनरल्स के रूप में होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज वोल्केनिक रॉक। You all know about the volcano eruption. When volcano erupt, it have lava. जो लावा बाहर आता है और ठंडा हो जाता है तो वो हमारी उस टाइप की रॉक्स को हम वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स मीन्स जब वोल्केनो के बीच में क्रैक्स पड़ते हैं, उन क्रैक्स के बीच में रॉक्स जो मिनरल्स होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और वो हमें प्लूटोनिक मिनरल्स मिलते हैं। नाउ द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंटन। सेडिमेंटन का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड्स में प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से कुछ रॉक्स मिलती हैं। और ये कैसे मिलती हैं हमें, लेयर वाइज, जैसे कि सैंडस्टोन मीन्स एक के ऊपर एक लेयर। जब ये सपोज एक लेयर है, उसके अंदर मिनरल्स फंसा, दूसरी लेयर लग गई। अब क्या होगा, जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक टाइप की स्पेशल टाइप की रॉक्स बनती है जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। नाउ लुक एट द मेटामॉर्फिक रॉक। व्हेन igneous and sedimentary rock are subjected to great heat and pressure, the original character and appearance completely change. कुछ रॉक्स जब हाई प्रेशर और हाई हीट में रखी जाती हैं तो क्या होता है कि उनका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस टाइप की रॉक को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रेफाइट है, लाइमस्टोन भी है इसका एग्जांपल। ओके, नाउ look at the rock cycle. Rock cycle is a continuous process in which rock changes from one kind into another. मतलब एक से दूसरे तरीके की रॉक्स के अंदर चेंज होती है। पहले इनर्जियस, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री एंड देन चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। दिस इज the called is rock cycle. Due to the extreme pressure and the heat, it converted into metamorphic rocks. Okay, this is the diagram. Now uses of rocks. Rocks are very useful in many ways as building material. आप लोग घरों में अपने घरों पर मार्बल्स लगाते हैं, it is a form of rock. Other metals also like iron, copper, aluminum, fossil fuel, etc. I hope you have understand about the chapter. Now look at the exercise. Before doing the exercise, you have to write the glossary. And before writing the glossary, I have written those things you have to write in the नोटबुक, जो मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में करवा रहा था मैं चैप्टर में, उसकी भी आपको क्या करना है, नोट्स के तौर पर कॉपी में लिखना है। चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। सीला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द मिनरल सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। मेंटल इज ऑल्सो नोन एज मेसोस्फीयर। नाउ dash is also known as barosphere. Which layer is known as barosphere? It is sandstone. Now the dash changes into graphite, which converted into graphite? Coal. Which converted into graphite? Coal. Now choose the correct answer. The thickness of metal is 2900 kilometer.
The innermost layer of the earth is also known as knife. इसको हम लोग कोर भी कहते हैं. मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन. किससे बना होता है? लाइमस्टोन से. द टर्म प्राइमरी रॉक इज यूज्ड फॉर, किसके लिए प्राइमरी रॉक्स होते हैं? इनर्जियस रॉक्स के लिए. किसके लिए करते हैं हम लोग? इनर्जियस रॉक्स के लिए. दिस इज मोस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है? ग्रेनाइट. नाउ लुक एट द मैचिंग. प्राइमरी रॉक्स कौन सी होती हैं? प्राइमरी रॉक कौन सी होती है हमारी? इनर्जियस रॉक. कौन सी होती है? इनर्जियस रॉक. सैंडस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक. मार्बल इज लाइमस्टोन. Sela converted into upper crust and the magma is lava. True, false? The core of the earth is made up of mantle and crust. क्या होगा? False. क्यों false होगा? The core of the earth is made up of inner and outer core. The deeper you go in the interior of the earth, it is hotter it get. ट्रू. जैसे जैसे हम और अंदर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हॉटर होता. नाउ सीमा फॉर्म्स फ्रॉम द ओशियन बेड. ट्रू. मार्बल, सिल्ट एंड कोजाट एन एग्जाम्पल ऑफ इनोवरिश रॉक. नो, फॉल्स, बिकॉज इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. नाउ metamorphic rocks are formed under the great heat and pressure. It is true. Now the exercise and the question answers I will send into the PDF form. I hope you will understand the chapter. Thank you.